Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the Tacheometric surveying chapter. Okay. In this, we study two cases, case number 1 and case number 2. Case number 1 में हमने क्या देखा? When the line of collimation is horizontal and staff is held vertically. Second case में क्या है? When the line of collimation or line of sight is inclined and the staff is held vertically. Third case में क्या है? When the line of sight is inclined but the staff is held normal to the line of sight. Normal, that means perpendicular to the line of sight. Okay. Here the measured angle may be the angle of elevation or depression. The angle of elevation के लिए हमें find out करना है. तो first of all यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्राउंड लेवल है. इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा है. ओके, उसका लाइन ऑफ साइट ये है. उसको हमने स्टाफ को उसके परपेंडिकुलर रखा है. ओके, तो ये केस में और वो आगे जो केस में उसमें क्या फर्क था? तो जो आगे हमने केस देखा, केस नंबर 2, उसमें ये स्टाफ है ना वर्टिकल रखा था, जबकि इसमें क्या है? परपेंडिकुलर रखा है लाइन ऑफ साइट से. ओके, और यहाँ पे आपका जो एंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बनेगा? ORC. ओके, तो यहाँ पे कितना एंगल है? 90 डिग्री. यहाँ पे कितना है? थीटा है. ओके, तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे थीटा है, तो ये वाला कौन सा एंगल बनेगा? दैट इज 90 माइनस थीटा. और ये एंगल कितना है? दैट इज 90. तो 90 माइनस थीटा माइनस 90, तो ये एंगल कितना रहेगा? थीटा. तो अभी यहाँ पे स्मॉल अलग से दूसरा ट्राइंगल बन रहा है CQ'. ओके, CQ', है तो उसका दो कंपोनेंट आएगा. दिस वन इज योर वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल कंपोनेंट में H sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? H cos थीटा. स्टाफ इंटरसेक्ट S यहाँ पे A to B डिस्टेंस जो भी है, दैट इज कॉल्ड स्टाफ इंटरसेक्ट. देन H, दैट इज द स्मॉल h, दैट इज द सेंट्रल हाइट और सेंट्रल स्टाफ रीडिंग है. ओके, फ्रॉम योर स्टाफ स्टेशन. ओके, और यहाँ पे जो सेंटर से जो भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल जो भी है, दैट मीन्स OR और जो भी सेंट्रल है रीडिंग है, उसका डिस्टेंस कितना? दैट इज B. यहाँ पे अभी ये ट्राइंगल लेंगे हम, तो ये ट्राइंगल में ये थीटा है. ट्राइंगल कौन सा लेना है? दैट इज COR. CO एंड R. तो इसमें यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये कितना रीडिंग बनेगा? दैट इज L cos थीटा. कैपिटल D डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये L cos थीटा है और प्लस H sin थीटा करेंगे तो हमें कैपिटल D मिल जाएगा. दिस वन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, दिस वन इज कॉल्ड HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ओके, दिस वन इज अ एंगल अल्फा, the angle between the upper hair and lower hair. Okay, or angle AOB, that is alpha. H क्या है वो हमने बोल दिया, डिस्कस कर लिया. Let horizontal distance formula. Let theta be the angle of elevation of the line of sight from the horizontal, that is line of axis. AB is the staff intercept. CQ is equal to central hair reading small h. OC is equal to inclined distance L. यहाँ पे OC क्या है? That is inclined distance L. Then CQ dash is equal to vertical height of the central head, that is H cos theta. तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा? That is H cos theta from this triangle. कौन सा ट्राइंगल? Q dash CQ. Okay. Then CQ dash is equal to vertical height of the head, that is H cos theta. QQ dash is equal to horizontal distance, that is H sin theta. वो हमने आगे देख लिया. Horizontal distance between P and Q. Horizontal distance between P and Q. Okay. तो यहाँ पे OR is the horizontal distance between P and C.
that is the station P, and that is the distance C, that is L cos theta. Okay, since the staff is normal to the line of sight, यहाँ पे क्या है, स्टाफ परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ साइट से, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, L इज इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एस प्लस एफ प्लस टी. एफ बाई आई का वैल्यू कितना है, ए इंटू एस प्लस पी. फ्रॉम द फिगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा. एल का वैल्यू क्या है, तो एल का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया है, तो क्या है, ए एस प्लस बी कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा. Therefore, AS cos theta plus B cos theta plus H sin theta. Vertical distance. Vertical distance में क्या है, तो vertical distance यहाँ से ये, तो that is L sin theta. तो L का वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ पे रख दो sin theta. This one is your second equation. Elevation of the staff station, that means मुझे elevation find out करना है, इसका RL find out करना है, तो कैसे करेंगे, तो एच आई दैट मीन्स यहाँ से इतना डिस्टेंस प्लस बी माइनस एच कॉस थीटा. तो हमें क्या मिलेगा, हाइट और आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्यू इज इक्वल टू आर एल ऑफ एच आई प्लस बी माइनस एच कॉस थीटा. इफ आर एल ऑफ एच आई अबाउट द डेटम इज नोन, द रिड्यूस लेवल ऑफ द क्यू कैन बी कैलकुलेटेड. देन यहाँ पे क्या किया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने कंसिडर किया है, अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस, तो यहाँ से ये कितना आएगा, v आएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज h cos थीटा, यहाँ से ये कितना आएगा, h sin थीटा, l cos थीटा, सेम टू सेम. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d कैसे मिलेगा, तो b यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d फाइंड आउट करना है. कैपिटल D इज इक्वल टू P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट. तो यहाँ पे Q डिस्टेंस यहाँ से है, दिस वन इज योर ओवरऑल L cos थीटा. तो L cos थीटा माइनस H sin थीटा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल D फ्रॉम दिस अबव फिगर. तो क्या आएगा, D इज इक्वल टू L cos थीटा प्लस H sin थीटा. L अगेन हमारे पास है F डिवाइडेड बाय I इंटू S प्लस F प्लस D. यहाँ पे D L का वैल्यू हमारे पास जो भी है, L का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज AS cos थीटा प्लस B cos थीटा माइनस H sin थीटा. देन वर्टिकल डिस्टेंस अगेन L sin थीटा. एलिवेशन, तो RL of HI, RL of HI, RL of HI, that means this minus V minus H cos theta. Okay, that is your vertical distance. Then next, if RL of HI is known above the benchmark, the reduced level RL of Q can be determined. Then STADIA constants or tacheometric constants. STADIA's constants में दो constants है, that is multiplying constant and additive constant. Multiplying constant कौन सा है, that is f by I, and additive constant that means f plus d. Multiplying constant A is equal to f divided by I, where f is equal to focal length of the lens, S is the stadia, I is the stadia intercept. The value of multiplying constant is generally 100. Okay. Additive constant B is equal to f plus d, where f is the focal length of the lens and h is the d is the horizontal distance between the instrument axis to the optical center. जो आगे हमने थियरी पढ़ा उसमें सब है. The value of the additive constant varies from 0.15 to 0.60. In the tacheometric surveying, the instrument used is known as a tacheometer. जो भी tacheometric surveying में हम instrument use करते हैं उसको tacheometer बोलते हैं. With the help of a tacheometer observation, stadia readings or vertical angles are taken, and the horizontal and vertical distances are determined by using the formula. By using the calculation, we should know the values of two constants. दो methods, laboratory method or field method. Okay. Two constants for a tacheometry to be used for survey. Generally, their values are mentioned
in the catalog supplied by the manufacturer. Also the constant may be determined. Manufacturer जो भी होगा वो supply करेगा constants का क्या क्या value आपको use करना है. दो methods है, उसके अलावा दो methods है, that is laboratory method and field measurement. Laboratory method में क्या करना होता है? So the focal length of the lens can be determined by means of the optical flash. According to the equation, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. The STADIA interval I can be measured from the diaphragm with the help of the vernier calipers. That means STADIA interval I can be measured from the diaphragm with the help of the vernier calipers. So, I का distance measure first. The distance of T between the optical center and the vertical axis of the tacheometric can also be measured. And the distances between the optical center and the vertical axis of the tacheometer can also be measured. This way, the multiplying constant A, that is f by I, and additive constant B can be calculated. Fixed error method अथवा field method. Field method में क्या करना होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन फिक्स करना होता है. अलग अलग डिस्टेंस पे आपको स्टाफ लेना होता है. फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से स्टाफ Q1 का डिस्टेंस D1 है और Q2 का डिस्टेंस D2 है. तो दोनों पे रीडिंग आएगा, अपर एंड लोअर है रीडिंग. तो अपर एंड लोअर है रीडिंग है, तो उसका डिफरेंस किया है तो हमें क्या मिलेगा? स्टाफ इंटरसेप्ट S1 और S2 मिलेगा. ओके, तो if valley level ground is selected and the tacheometer is set up at P1 and pegs are fixed at Q1 and known distance apart, the staff intercept, that is STADIA hair readings, are noted at each of the pegs. Let this intercept be S1 and S2. That means यहाँ पे S1 और S2 ऊपर है और लोअर है. रीडिंग का डिस्टेंस वैल्यू कितना लेना है? That is S1 and S2 for staff Q1 and Q2. The horizontal distance of the pegs from the P1 are accurately measured. That means P1 से आपको डिस्टेंस जो भी है वो accurately measure करना. Accurately measure this distances be D1 and D2. तो आपको formulas आपके पास है. D is equal to 1 by I S1 plus F plus by substituting the value of D1, D2, S1 and S2 in the general equation. Horizontal distances of the pegs P1 are accurately. That means आपको D1, D2 तो पता ही है. Okay. D1, D2 पता है और स्टाफ इंटरसेप्ट पता है. इसका वैल्यू सब रखो, दो इक्वेशन मिलेगा. दो इक्वेशन फिर से आपको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ A and value of P, दोनों को सॉल्व करो. Okay. By solving the above two equations, value of A and B are determined. The next one is movable hair method. In this method, the staff is held constant. Okay. तो आपका स्टाफ इसमें क्या होता है? स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स होता है और स्टेडिया इंटरवल मूव होता है. So in this method the staff is kept constant. आप दो जो भी आपका स्टाफ इंटरसेप्ट है वो कांस्टेंट रखते हो और जो भी इंस्ट्रूमेंट दूर और नजदीक जाएगा उसकी वजह से आपका आई चेंज होता रहेगा. दैट इज स्टेडिया इंटरवल. और दूसरा ये भी होता है इसमें कि आपको दो टारगेट्स दिए. द अपर हेड बाइसेक्ट द अपर स्टाफ रीडिंग एंड लोअर हेड बाइसेक्ट द लोअर स्टाफ रीडिंग. उसकी मदद से आपको क्या करना पड़ता है? वो जो भी टारगेट्स होते हैं उसको फिक्स रखना होता है. दैट इज कॉल्ड द मूवेबल हेयर मेथड. ओके, so in this method the staff is kept constant but the distance between the stadia hair is variable and the theodolite is provided with a special type of diaphragm shown in the figure. This type of theodolite is known as a substance theodolite. The diaphragm consists of a central wire fixed with the axis of the touch. The upper and the lower stadia wires can be moved by micrometer screws in a vertical plane.
and the distance by which the stadia wires are moved is measured according to the number of the turns of the micrometer screws. The full turns are read on the graduated scale seen in the field of the view, and the functional part of the turn is read on the graduated drum of the micrometer screw placed one above the or one below the eyepiece. The total distance through which the stadia wires move is equal to the sum of the micrometer. If the distance between the instrument station and the start position is within 200 meters, an ordinary leveling staff may be used and a full meter reading used for the purpose of observing a constant intercept. For distances exceeding 200 meters, it becomes difficult to read the graduation. In such cases, two bands or targets are fixed at a known distance apart on a shaft are observed. A third target is fixed at the midpoint of the targets. हम आगे substance bar method देखेंगे, उसमें सब है. For taking the observation, the middle target is first bisected by the center wire, then the micrometer screws are simultaneously turned to move the stadia wires until. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना होता है, जो सेंटर स्टेडिया है उससे टारगेट को उसको सेंटर में जो भी आपका टारगेट दिया है उसके सेंटर में लाके आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स है और जो भी आपका डायफ्राम स्क्रू है उसकी मदद से आपको क्या है, अपर टारगेट को बाइसेक्ट करना होता है और लोअर टारगेट को बाइसेक्ट करना होता है. एंड द रीडिंग्स आर देन टेकन. The distances and the elevation formulas. When the line of sight is horizontal, the tacheometric horizontal distances formula is equal to D is equal to F by I into S plus F plus D is equally applicable to the movable hat method. In this case of all the terms on right hand side on the constant except I, the stadia interval hence. तो यार इसमें ऐसा formulas दिया है वो आपको सिर्फ याद रखना है. The multiplying constant is equal to S. Additive constant is equal to F plus T. If M is the total number of the resolutions of the micrometer of the pitch P for the staff intercept, and hence I is equal to P. Substituting the value of I in tacheometric equation, we have वैल्यू आपको किसकी रखनी है, I की वैल्यू इसमें रखनी है. तो I is equal to MP. तो MP की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, S into F divided by MP plus F plus T. और D is equal to A by M into S plus V. However, if E is the index error, equation 1 reduces to. तो E is the index error है, तो equation 1 is reduces to A divided by M minus C into S plus B. ये formulas वगैरह याद रखना आप. Okay. The value of the multiplying constant A is equal to F plus P varies from the 600 to 1000. Next one is when the line of sight is called. The formula used for fixed error method are equally applicable to this method. जो भी हमने लाइन ऑफ साइट वाली जो भी फॉर्मूला यूज किया है फिक्स एरर मेथड वो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो. When the line of sight is called, the formula used for the fixed error method are equally applicable to this method. B का वैल्यू कितना है, A डिवाइड बाय M इंटू S cos थीटा प्लस B cos थीटा. सेम टू सेम यहाँ पे E की जगह पे क्या लिखा है, सो सिंपली A की जगह पे A डिवाइड बाय M लिखा. बाकी फॉर्मूला ये है D is equal to A divided by M into S into cos theta plus B cos theta. This one is a equation number 1. B is equal to A divided by M into S into sin theta by 2 plus or minus plus B cos theta. This one is equation number 2. Tangential method.
This method is used when the theodolite is a simple transit type and does not carry a stadia diaphragm. Okay. The method इसमें stadia diaphragm का रीडिंग नहीं लेना होता है, but टारगेट से एंगल भी लेना होता है. ओके, तो टारगेट से एंगल लेना होता है θ1, θ2. देन वो हम आगे देखेंगे θ1, θ2 वो सब. The vertical angles θ1 and θ2 are measured by sighting the two targets by the theodolite. The horizontal distance d and the vertical intercept v are computed from the values of s, θ1, θ2, etc. Okay. Depending upon whether the analysis θ1 and θ2 are angles of elevation or compression, the following three cases may write. First case, when both the angles of the targets are angle of elevation, when both the angles of the targets are angle of depression, when one angle is that of the elevation and other that of depression. Okay, the cases are then distance and elevation formula. Both the angles are angles of elevation. In this case, the staff is held vertical. So first of all, A पे क्या एंगल है 0 to A. That means यहाँ पे दो टारगेट फिक्स है A and B. वहाँ पे आपको क्या करना होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू की मदद से आपको क्या करना होता है, टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट A को बाइसेक्ट करो, देन टारगेट B को बाइसेक्ट करो. So both the angles are angle of elevation. In this case, the staff is held vertically. यहाँ पे staff vertically रखा है. This one is your θ1 angle for target A, or θB angle. That means for target B angle is θ2. RL of HI. Then यहाँ पे B से आप जो भी फर्स्ट रीडिंग ले रहे हो, ओके, बी से आप ले रहे हो, यानी जो भी रीडिंग आप ले रहे हो नीचे से, तो दैट इज स्मॉल एच, देन स्टाफ इंटरसेप्ट एच, और बी से जो भी आर तक का डिस्टेंस है, ओके, दैट मीन्स RL ऑफ HI और स्टाफ रीडिंग एट बी और लोअर है रीडिंग, ओके, तो वहां तक का डिस्टेंस कितना है बी. यहाँ पे P is the instrument station, then O is the instrument axis, Q is the staff station, then V is the vertical distance between lower van and axis of the telescope. So V is the distance between the lower van and vertical axis of the instrument, lower van and axis of the instrument. S is the distance between the targets. एक स्टाफ है, उसमें दो टारगेट्स फिक्स किया है, अपर टारगेट लोअर टारगेट. तो एस दैट इज द distance between the targets. θ1 is equal to vertical angle made by upper target and θ2 is equal to vertical angle made by lower target. Small h is equal to height of the lower van above the staff station. तो small h क्या है, height of the lower van above the staff station. So from this figure V plus S is equal to tan θ1 V plus S is equal to tan θ1 d tan θ1. यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा लिया है हमने, AOR है. तो ये डिस्टेंस कितना है हॉरिजॉन्टल, दैट इज D, वर्टिकल डिस्टेंस V. आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल AOR लेना है. तो इसमें tan θ1 इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज
V plus S डिवाइड बाय D। तो क्या आएगा V plus S इज इक्वल टू D tan थीटा 1। तो इस ट्राइंगल में हम देखें तो इस ट्राइंगल में फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल की बात करें, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज बी, दैट इज बी, ये बी है। देन ये क्या है, दैट इज ये आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, दैट इज ये कौन सा ट्राइंगल है, दैट इज ए, दिस वन इज ओ एंड दिस वन इज आर। ओके, ओ ए आर, और ये कितना है, दैट इज थीटा 1। दिस एंगल इज थीटा 1। तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है, s प्लस v डिवाइड बाय d। तो s प्लस v डिवाइड बाय d है, तो क्या आएगा, v प्लस s इज इक्वल टू d tan थीटा 1। तो v इज इक्वल टू d tan, अगेन v मुझे फाइंड आउट करना है, तो v तो ट्राइंगल ये वाला लेंगे। तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू v डिवाइड बाय d। तो v इज इक्वल टू d tan थीटा। अभी ये dv की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, v प्लस s में रखनी है। तो v प्लस s में रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू d tan थीटा 1 माइनस v। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन पे से आएगा, ये इक्वेशन है, वहां से आएगा v प्लस s। तो v का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे रख दिया, उसको यहाँ पे लेके आए, तो d tan थीटा 1 माइनस v। तो d tan थीटा 1 माइनस d tan थीटा 2, दैट इज d tan थीटा 1 प्लस d tan थीटा 2। अभी d का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या आएगा, d का वैल्यू, तो सिंपली ये फॉर्मूला पे से d का वैल्यू कितना आएगा, s डिवाइड बाय tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। अगेन v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो d tan थीटा 2। ओके, तो d का वैल्यू, v का d tan थीटा 2। तो d का वैल्यू हमारे पास है s डिवाइड बाय tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 इनटू tan थीटा 2। अभी RL ऑफ क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा, तो RL ऑफ HI प्लस V प्लस S। ओके, तो RL ऑफ क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, तो RL ऑफ HI प्लस V माइनस H फॉर्मूला। Then next one is both the angles are angle of depression. एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट आप रीडिंग दैट इज एंगल थीटा 1, यहाँ से एंगल थीटा 2, यहाँ से यहाँ तक का v वैल्यू है, यहाँ a टू b कौन सा वैल्यू है, दैट इज s स्टाफ इंटरसेप्ट। अगेन फ्रॉम फॉर्मूला, तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू d tan थीटा 2। v हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल कितना मिलेगा, दिस, तो ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D tan थीटा 2। तो v is equal to d tan theta 2 and v minus s, v
minus s, that is d tan theta 1. Okay, d tan theta 1. तो फिर v माइनस s है इज इक्वल टू d tan theta 1, तो उसमें ये v की वैल्यू रख दे तो क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू v माइनस d tan theta 1. That is therefore d is tan theta 2 minus d tan theta 1, that is d into tan theta 2 minus tan theta 1. और अभी d का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो s डिवाइड बाई tan theta 2 minus tan theta 1. v का फाइंड आउट करना है तो v का d tan theta 2, तो d tan theta 2, तो d का वैल्यू हमारे पास है, इसमें रख देते हैं. तो दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2 और दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1. d and v. d is equal to s divided by tan theta 2 minus tan theta 1 and v is equal to d tan theta 2 is equal to s tan theta 2 divided by tan theta 2 minus tan theta 1. Okay. When one angle is angle of elevation and another angle is angle of depression, the staff is vertically. यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, तो यहाँ पे एक एंगल एलिवेशन में है और दूसरा एंगल डिप्रेशन में. Here theta is indicated by a positive sign, angle of elevation, and theta 2 is by a negative sign, that is angle of depression. Okay. The rotation used is same as in the case 1. Here notations used, जो भी हमारा notation से सेम ही है, कोई अलग नहीं है. From the figure v is equal to कितना आएगा, d tan theta 2, d tan theta 2, और सेकेंड s minus v, v minus s is equal to d tan theta 1. इसमें फॉर्मूला में s v is equal to v फाइंड आउट करना है, तो दैट इज d tan theta 2 और s minus v फाइंड आउट करना है, तो s minus v that is d tan theta 1. Therefore s is equal to d tan theta 1 plus v, d tan theta 1 plus d tan theta 2. v का वैल्यू कितना है, d tan theta 2, d कॉमन निकाल दो, tan theta 1 plus tan theta 2, और v का फॉर्मूला हमारे पास है, उसमें d का वैल्यू रखो, तो v का फॉर्मूला मिल जाएगा s tan theta 2 divided by tan theta 1 plus tan theta 2. The RL of staff station Q is equal to RL of HI minus V minus I. The only advantage of the tangential method is that the survey can be conducted by ordinary transit theodolite, the only advantage of the tangential method is that the survey can be conducted by ordinary transit theodolite, which does not carry STADIA diaphragm. Disadvantages of the tangential method क्या है, two vertical angles are observed for computing a distances. It requires compulsory more times. Then this method is very tedious, and during the observations the instrument might instruments might get disturbed unnoticed. ये सब उसका क्या है, disadvantages. Notes: the movable and tangential method are not generally adopted. The most common method of tacheometry is a fixer method using a staff and held vertically. Okay, thank you.